पूजा करने वाले अगरबत्ती, घी, दीपक इत्यादि का भी खर्च होता है, परंतु फिर भी उनके बारे में चिंता नहीं की जाती, क्योंकि मैं उन्हें धर्म विशेष का वोट चाहिए। वे दूसरी और जिन राज्यों में चुनाव है वह कांग्रेस के राजकुमार, मैं हिंदू हूं कहते हैं। Honorable Chairperson, first of all, I would like to express my regret for not being at my chair when you took my name. It was because I was attending a standing committee meeting on finance. Sir, please. Sir, no. Sir, I request you to please. एक मिनट बिदुरी जी, कांग्रेस के लिए राजकुमार जगह जगह एक मिनट आपका 0 ओवर का मैं 30 सेकंड एक मिनट आपका 0 ओवर का सबमिशन ये है कि हिंदू टेंपल को प्रीस्ट को अलाउंस देना चाहिए। आप उस डिमांड खत्म हो गया सर, 30 सेकंड में सर खत्म हो गया, 15 सेकंड में 15। आई एम कंक्लूडिंग सर। डिमांड सर 2 या 3 राज्यों में इनकी बची सरकार है जहां कांग्रेस की, वहां ये राजकुमार जा कर रहे हिंदू की दुआई दे रहे। अध्यक्ष में पंजाब में दोनों गिरगिट मुक्त बिजली का वादा कर रहे हैं, परंतु मैं इनसे पूछ रहा था तो क्या दिल्ली में कांग्रेस शासित राज्यों में मंदिरों में बिजली मुक्त की गई है, वो क्यों नहीं की गई है? नो प्लीज No, his speech. Definitely, his speech will be. Sir, that will be verified, and it will be. Such kind of statements cannot be made during yes, 0 hour. Definitely. Please review the speech, sir. And unparliamentary words should be expunged, sir. That will be verified and. Please correct. review the speech, sir. Yes, sir, I rise to speak in for the subject that was listed in 0 hour, which was the status of the 4-lane highway NH37. Say every day the minister says that so many kilometers of highways are being constructed every day. But if you see the state of the highway between Dibrugarh and Nagaon, the 4-lane highway, that project was supposed to have been completed by December 2019. We're in 2022 and there's no way, the completion is nowhere in sight. The minister, union minister between 2014 till now has visited the site so many times. The state government the chief minister has visited the site so many times. The NHIDSCL, they have been complained to so many times, but the state of this 4-lane highway is absolutely poor. If people are being inconvenienced, the Jorhat airport, Dibrugarh airport, this is Upper Assam where there's so much of pristine natural beauty. It is hurting the image of our state. It is affecting the tourists. So I request the government to urgently complete the 4-laning of highway on NH37 between Dibrugarh and Nagaon. Thank you. Thank you very much. Thank you. Shri Nabha Kumar Saraina ji. थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं असम के एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके जरिए ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। महोदय, असम के साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम का सीमा विवाद चल रहा है। कुछ महीने पहले मिजोरम बॉर्डर में से पुलिसकर्मी को भी मार दिया असम का। सुनने में आया है कि असम सरकार ने अपना कुछ एरिया पड़ोसी राज्यों को भी छोड़ देने वाला है। असम सरकार पहले से भी इस विषय पर थोड़ा चौकन्ना था। आपको पता है असम के विभाजित होने के गम हम लोगों में अभी भी है। हमारा बीटीसी भी अलग राज्य बनते बनते रह गया। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि विवादित सीमा एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा केंद्र सरकार के पहल से एक मॉडल बनाना चाहिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और बॉर्डर बिजनेस सेंटर बने और उससे लोगों का रोजगार मिले और वहाँ शांति कायम हो। अगर ये नहीं करेगा, अपने जो बहुमत के दम पर अगर ये एरिया छोड़ देगा तो असम का लोग उसका जरूर बुरा मानेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या। Thank you, sir. So, as a part of the rationalization exercise, Prasar Bharati is merging some radio stations with bigger ones. As a part of that exercise, one local classical music airing channel from Bengaluru called Amruta Varshini, which predominantly was airing Karnataka classical music, has been merged with another
channel called Ragam. And many artists who were dependent on this channel have now lost out on opportunities. My request with the Honorable Government is to kindly make arrangements to restart operations of Amrita Varshini as an independent channel and provide for a platform and opportunity for all the local talent who were performing on the platform of the erstwhile channel. The channel enjoyed great listenership both inside of the country as well as among the NRI population. Therefore, I once again request the concerned authorities to restart the operations of Amrita Varshini channel. Thank you. Shri T.R. Pariventarji. Thank you, Speaker Sir, for the time. My Perambalur parliamentary constituency is one of the backward constituency in Tamil Nadu, and most of the people belonging to the constituency are agriculture background. As per Union Budget 2021, it was announced by the government 100 Sainik schools will be established in the country. As an educationalist, I welcome the announcement by the Government of India. I would like to request the Union Government, through you, sir, to consider the proposal to set up Sainik school in Thorayur, Pachamalai, in Perambalur parliamentary constituency, which is a hilly area and most suitable for defense education. Sainik schools provide quality education at a reasonable fee, and it is prepared boys academically, physically and mentally strong to enter into the National Defence Academy to serve the nation. Thank you. Thank you, Srimati Pradima Mandul. Sir, a landmark bill has been brought which proposes to raise the marriageable age of women in the country. But it is being left on 30 male MPs and only 1 woman MP. Sir, nothing can be more unfair than this. The domination of male members reflects that the patriarchal principle on which the Indian society is based. So the future of crores of girls will be decided by a parliamentary committee which has only 1 woman. Sir, since the bill has been referred to the Standing Committee on Education, Women, Child, Youth and Sports, so which is a Rajya Sabha administered committee, and Honorable Chairman is empowered to invite additional members. Madam, this is a matter which falls under the jurisdiction of Honorable Speaker. So this is my request. No, please. This is the decision of the chairman and nothing to do with it. Please avoid this observation. So, sir, I would like to request the Honorable Speaker, through you, sir, since he is not in chair, that he can only kindly... That you can very well meet the Speaker and make the submission, please. And so that because only a gender balanced panel this is the prerogative. Sure. Please, let me. This is the authority of the Speaker. You are indirectly questioning the authority of the Speaker. In constituting a committee, you can very well meet the Speaker, and it is under the consideration of the Speaker. Please. The matter is, yes. She is not questioning. She is simply suggesting. Yes, I know. She is urging for it. Yes, definitely. That is why I am saying first I said that the matter which you have raised is under the consideration of the Honorable Speaker. So please keep it in abeyance. Let us close that issue by that. Very well, you can speak on the subject of Yes, I will write a letter to the Honorable Speaker. Yeah, sir, that is, madam. Conclude me so that I can conclude my speech. Yeah, only please, one line. Please. Sir, I would like to request the Honorable Speaker through you, sir, to look into the matter directly, because only a gender balanced panel will make sure that the women have equal say in issues which affect them. Thank you, sir. Thank you. Shri S. Venkatesan. அவைத் தலைவர் அவர்களே வணக்கம். ஜனவரி 15ஆம் தேதி
தமிழகத்திலே தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் ஒளிபரப்பான சிறார்கள் நடத்திய நிகழ்ச்சி அரசினுடைய மாண்பை குலைத்து விட்டதாக சொல்லி ஒன்றிய இணையமைச்சர் அவரே ஒரு புகாரை கேட்டு வாங்கி அந்த தொலைக்காட்சிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறார். ஆனால் இன்றைய தினம் கர்நாடகத்தில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? ஹிஜாப் அணிவதை முன்வைத்து நடைபெறும் வெறுப்பு அரசியல் மாணவ சமூகத்தையே கூறு போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. தன் வயதை ஒத்த மாணவர்களோடு கலந்துரையாடி சமூகமயமாக வேண்டிய மாணவ சமூகத்தினுடைய முன்னுரிமையை குலைக்கிறது. சிறார்கள் தலையிலே கிரீடம் அணிவதும் அல்லது மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிவதும் இவர்களினுடைய உத்தரவின் பேரில் தான் நடக்க வேண்டுமா? பள்ளி குழந்தைகள் என்ன நாடகம் போட வேண்டும் என்பதும் மாணவ சமூகம் என்ன ஆடை அணிய வேண்டும் என்பதையும் உத்தரவிட இவர்கள் யார் என்ற கேள்வியை இந்த அவையிலே நான் எழுப்ப விரும்புகிறேன். லாவண்யாவினுடைய மரணத்திற்கு மதமாற்றம் காரணமாக இருக்குமோ, மர்மம் காரணமாக இருக்குமோ என்று சொல்லி அவசரமாக தேசிய குழந்தைகள் ஆணையம் தமிழகத்துக்கு விரைகிறது. ஆனால் கர்நாடகத்திற்கு இன்றைக்கு வரை எந்த ஆணையமும் விரையவில்லையே ஏன் என்ற கேள்வியை இங்கே கேட்க விரும்புகிறேன். சிறார்கள் நடத்திய நாடகத்தின்பால் ஒன்றிய அமைச்சகம் உடனடியாக தலையீடு செய்கிறது. ஆனால் கர்நாடக பிரச்சனையை பேச இந்த அவையிலே நீங்கள் நேரம் ஒதுக்க மறுக்கிறீர்களே, அது ஏன் என்ற கேள்வியை இங்கே கேட்க விரும்புகின்றோம். துணியை வைத்து எங்களது கல்வி உரிமையை பறிக்க விட மாட்டோம் என்று முழங்கி இருக்கிறார் வீரப்பன் முஸ்கான். அவைத்தலைவர் அவர்களே, சக மாணவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டாம், அவர்கள் செய்தது தவறு என்று உணர்ந்தால் போதும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் முஸ்கான். இந்த வார்த்தை மதவெறியை மண்டியிடச் செய்யும் வார்த்தை. இந்த வார்த்தை மாணவியின் வார்த்தை அல்ல, ராமனின் வார்த்தை, நபிகளின் வார்த்தை, இயேசுபிரானின் வார்த்தை. மதவெறியை மண்டியிடச் செய்ய மனிதன் கற்றுக் கொடுத்த மகத்தான வார்த்தை. இந்த அவை முழுக்க இந்த வார்த்தைகள் எதிரொலிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Dr. Sujay Radhakrishnan, please. Dr. Sujay Radhakrishnan. धन्यवाद सभापति महोदय. Yeah, please. Dr. Sujay. No, आप जी. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी. सर, हमारी सरकार ने 2014 से रेलवे के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है और बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत का निर्माण और संचालन की भी घोषणा की है. हमारा लक्ष्य 2022 तक 100% इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल कोच का है और वर्तमान में भारत में सिर्फ 3 रेल कोच फैक्ट्रीज हैं और महाराष्ट्र में लातूर में 1 कोच फैक्ट्री हमारी सरकार ने शुरू की है, लेकिन वहां सिर्फ लोकल ट्रेन और EMU ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है. हमारे देश में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न ट्रेन जिसमें विस्टाडोम, वंदे भारत, तेजस और भविष्य में बुलेट ट्रेन शामिल हैं, उनकी डिमांड को देखते हुए नया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रेल कोच फैक्ट्री की आवश्यकता है. मेरे सरकार से ये निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के लक्ष्य को सार्थक करने के लिए मेरे लोकसभा क्षेत्र अहमदनगर में एक स्टेट ऑफ आर्ट रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण हो, जिससे कि अहमदनगर और पूरे महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर मिले एवं अर्थव्यवस्था भी फायदा हो और भारतीय रेल को इंजेक्शन प्रक्रिया और बूस्ट किया जा सके. थैंक यू. धन्यवाद. श्री प्रताप राव पाटिल चकलीदा. महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र नांदेड़ मराठवाड़ा क्षेत्र का एक मुख्य शहर है और यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के विश्व प्रसिद्ध गुरु का गद्दी गुरुद्वारा की धरती है, जहाँ विश्व भर के धार्मिक, व्यावसायिक दृष्टि से लोग का आवागमन होता है. महोदय, मेरी प्रमुख मांग सरकार से यह है कि सरकार नांदेड़ में एक बड़ा उद्योग स्थापित करने का कदम उठाए, क्योंकि नांदेड़ ही नहीं आसपास दूर दूर तक ऐसा कोई उद्योग स्थापित नहीं है जहां से क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके. महोदय, मुझे ये कहने में दुख होता है कि नांदेड़ में देश के बड़े बड़े नेता आए और वर्षों राज किया और चले गए, लेकिन कभी इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के बारे में कोई विचार तक नहीं किया, जबकि हमारे पास उद्योग खोलने के लिए सभी संसाधन मौजूद हैं और जो भी आवश्यकता है उद्योग स्थापन करने के लिए होगी
उसकी पूर्ति हो सकती है। जनता भी साथ में, हम जनप्रतिनिधि भी पूर्ण इसके लिए सहयोग के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन किसी भी अवस्था में सरकार इस और अपना ध्यान आकर्षित करे और नांदेड़ में बड़ा उद्योग स्थापित करने के हेतु आवश्यक कदम उठाए, ताकि जिले के ग्रामीण किसानों एवं हर वर्ग के शिक्षित युवाओं को रोजगार का रास्ता खुले। धन्यवाद। थैंक यू। श्री कोतागिरी श्रीधर। Thank you, sir. Sir, Sri Krishna Jute Mills in my constituency, a 100-year-old factory employing over 5,000 people. It is a captive jute gunny bags for Food Corporation of India. It's closed down about a week ago on 27 January. Andhra Pradesh used to be next to West Bengal in jute production once upon a time. Today it is almost zero. All this happened because of the price restriction policy of Jute Corporation and Food Ministry. While they are price sensitive, it is unfortunate that indirectly they are helping a plastic product from Reliance Industries in place of millions of farmers who are supplying jute industry, from the jute industry. We should also note that I would like the government to note that our Honorable Prime Minister made an announcement to ban single-use plastic very soon. And one side, in this area, we are encouraging a plastic product from HDPE coming from petroleum product. So I would like the government to realize that we have to bring back jute industry, because jute bags are going to be a major source of carrying bulk goods, let it be rice, sugar, or all other essential commodities. So kindly realize that jute is a product coming from millions of farmers. We need to encourage, we're talking about doubling farmers' income, we're talking about rejuvenating rural economies, and we are talking about saving environment. For which reason, I would like the government to take a serious note in support of the jute industry, both in Andhra Pradesh as well as West Bengal and rest of the country. Shri Ganesh Singh ji. सभापति महोदय, मैं विषय परिवर्तन की अनुमति चाहता हूं। यस। मैं भारत सरकार का ध्यान अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक निर्णय, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण राज्यों ने दिया था, उसे समाप्त कर दिया गया है, उस ओर दिलाना चाहता हूं। राज्यों ने अपने अपने राज्य की सामाजिक स्थितियों को देखकर अलग अलग तरीके से पंचायतों अथवा अन्य स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्थाएं की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है, उसके विरुद्ध हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। उसी के चलते राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव रोक दिए गए हैं। मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री जी से मांग करता हूं कि राज्यों को पुनः अधिकार अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु संसद में कानून बनाए जाने की मांग करता हूं, ताकि राज्य सरकारें अपने राज्य की स्थिति के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दे सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री सुभाष चंद्र बहरिया। धन्यवाद सभापति महोदय। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वित्तीय सोसाइटी है और 20 सालों से काम कर रही थी, पर अक्टूबर 18 से जो निवेशक है उनका भुगतान बंद कर दिया गया है और सोसाइटी ने कारण बताया कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एसओजी और इन्होंने खाते सीज कर दिए। मेरा आपसे आग्रह है कि लगभग पूरे देश के, मेरे लोकसभा क्षेत्र के भी पूरे देश के 20 लाख निवेशकों का इसमें पैसा अटका हुआ है। सोसाइटी उसके बचत खातों में निवेशकों के में पैसे डाल रही है, लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार ने अकाउंट सीज किया हुआ है। तो मेरा आग्रह है केंद्र सरकार से, क्योंकि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और यह केंद्र के अंडर में आती है, केंद्र के जो सोसाइटी मंत्रालय विभाग उसके अंडर में आती है, तो सरकार इसको अपने नियंत्रण में लेके निवेशकों का भुगतान करे और आम जन को, गरीबों को रिलीफ दे। धन्यवाद। श्री गौतम सिंगामणि पुन। நன்றி அவைத்தலைவர் அவர்களே. என்னுடைய கள்ளக்குறிச்சி பாராளுமன்ற தொகுதி மிகவும் பின்தங்கிய தொகுதி. விழுப்புரம் மாவட்டத்திலிருந்து புதியதாக
பிரிக்கப்பட்ட தொகுதி. கள்ளக்குறிச்சி அதன் மாவட்ட தலைநகராக உள்ளது. விருதாச்சலம் சேலம் ரயில் பாதையில் ரயில் தடத்தில் உள்ள சின்ன சேலத்தில் ரயில் நிலையம் அமைந்துள்ளது. அங்கிருந்து கள்ளக்குறிச்சி 16 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு புதிய அகல ரயில் பாதை அமைக்க 2006லேயே கழகத் தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் முதல்வராக இருந்தபோது அதற்கான திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு, ஆனால் 2016ல் அப்போதைய மத்திய அமைச்சராக இருந்த திரு சுரேஷ் பிரபு அவர்களால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. இந்த கள்ளக்குறிச்சி பாராளுமன்ற தொகுதியில் ஜவ்வரிசி ஆலைகளும் அரிசி ஆலைகளும் சர்க்கரை ஆலைகளும் நூற்பாலைகளும் நிறைந்த பகுதி. அதேபோல் பல கல்வி நிலையங்கள் அமைந்த பகுதி. இங்கு ஒரு ரயில் நிலையம் இல்லாத காரணத்தால் இங்கிருந்து போக்குவரத்துக்கு, அதேபோல் இங்கிருந்து வேளாண் பொருட்களை மற்ற மாவட்டங்களுக்கும் மற்ற மாநிலங்களுக்கும் அனுப்புவதற்கு மிகவும் சிரமமாக இருக்கிறது. அதனால் இந்த திட்டத்தை உடனடியாக மத்திய அரசு நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதேபோல் என்னுடைய மாவட்டத்திலிருந்து ஏறத்தாழ 25,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கேரளாவிலும் மகாராஷ்டிராவிலும் வேலைக்காக சென்றிருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் ரொம்ப இந்த போக்குவரத்து வசதி, ரயில் போக்குவரத்து வசதி இல்லாததால் மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். இந்த கொரோனா காலத்திலேயே மிக அதிகமான சிரமத்தை அனுபவித்தார்கள். அதனால் மத்திய அரசு இதற்காக 116 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டும் ஆனால் இதுவரை எந்த வேலைகளும் நடைபெறவில்லை. அதனால் உங்கள் மூலமாக நான் தயவு செய்து ரயில்வே அமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன், மிக விரைவில் இந்த திட்டங்களை இந்த கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திற்கு அளிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். Honorable members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise matter under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed. Now let us resume the discussion on the general budget. The first speaker today is Dr. Farooq Abdullah ji. Mr. Chairman. Mr. Chairman, thank you for giving me this privilege. On the budget, I'd like to put some points before. Under the present situation of the country, there is huge unemployment. बहुत ज़बरदस्त, ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है हम सब के लिए और मेरी रियासत के लिए बहुत मुश्किल मुद्दा है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां बिल्कुल कोई नौकरी नहीं है, बड़ी बड़ी तालीमें भी पाई हुई हैं मगर बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं एंड अंडर गोइंग वेरी ग्रेट डिप्रेशन. एक तो ये है. दूसरा, आप देखें कीमतें बढ़ रही हैं, वो कुकिंग गैस हो, वो डीजल हो, वो पेट्रोल हो, और मुझे डर इस बात का है कि बहुत जल्दी एक बैरल की कीमत $100 हो जाएगी और फिर से जब ये इलेक्शन खत्म हो जाएंगे इनकी कीमत बढ़ती जाएगी और इसका असर हर कमोडिटी पे हो जाता है. और जो हम रियासतें, जो पहाड़ी रियासतें हैं जहां सब माल गाड़ी से जाता है, उनकी कीमत बढ़ जाती है और गुर्बत बढ़ जाती है और लोग बाग बहुत मुश्किल से वो चीज़ें ले सकते हैं. ये हालत बन गई है. मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके इस पे जो टैक्सेस हैं उसको कम किया जाए कि गरीबी बचाई जाए, क्योंकि नहीं तो गरीब जो है वो मिट रहा है और अमीर बहुत अमीर हो रहा है. नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड ने न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि सारी दुनिया को इफेक्ट किया है और उससे काफ़ी असर हम सब पे पड़ा हुआ है. जनाब, एक और बहुत बड़ी जो मुश्किलात आ गए हैं, अब आप देखें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है it has increased by only 1.7 lakh crores from 37.7 lakh crores in 2021-22
to 39,045 lakh crores in 2022-23. This rise is even lower than the inflation rate. Likewise, the allocation under MNREGA, which is the lifeline of our people, and most of the poor are the ones who are able to feed themselves, is due to MNREGA. And in that, sir, the position is that 73,000 crores, which is lower than the allocation of 98,000 crores and the actual spending of rupees 1,11,170 crores during 2021-22. Sir, the progress on works taken up by the Government of India, whether on roads, tunnels or power projects, उसमें हालत ये है कि सारी उनके जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी लोअर से लोअर एम्प्लॉय भी ये बाहर की रियासतों से ला रहे हैं। आज हालत ये है कि किश्तवाड़ में जहां पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, आज 4 हफ्तों से वहां पे जो औरत है डीडीजी की चेयरमैन और लोग वहां बाहर बर्फ में और बारिश में बैठे हुए हैं कि भाई ये लोकल लोग कहां जाएंगे, इनका क्या होगा। मेरे वक्त में भी जब पावर प्रोजेक्ट्स थे उनमें लोकल एम्प्लॉयमेंट थी, और अगर आज देखें उन इलाकों की हालत, वो गरीबी से ऊपर उठ गए थे उन प्रोजेक्ट से। इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तवज्जो देनी चाहिए कि उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जरूर होनी चाहिए। सर, फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर नेशन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि इन्होंने वो 3 लॉ जो है वो रिपील किए। अगर के 700 से ज़्यादा लोग मर गए, मगर रिपील किया, बहुत अच्छी बात है। मैं आगे भी इनसे गुजारिश करूंगा कि जब भी ये कोई लॉ बनाएं, और अगर ऑपोजिशन इनसे कहती है कि साहब इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, इसको देखिए, तो उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। हम लोग कोई आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपको बेहतरीन एडवाइस देंगे जिससे कि आपकी हुकूमत भी चल सकेगी और मुल्क भी तरक्की कर सकेगा। सर, जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है, very much dependent, sir, on 2 sectors. One is tourism, one is the horticulture. Sir, हमारे एप्पल ग्रोवर्स की यह हालत है, न सिर्फ हमारे बल्कि हिमाचल प्रदेश का भी एप्पल ग्रोवर जो है आज रो रहा है, क्योंकि ये लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं, और उनका एप्पल यहाँ बेच रहे हैं जिसपे कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है लाने के लिए, और हमारे लोग जो हैं उनके एप्पल कोल्ड स्टोर्स में और बाकी जगहों पे सर्दी में इस वक्त सड़ रहे हैं। सर, ये एक बहुत बड़ा धक्का हमारे इन लोगों को है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो हमारी बैकबोन है, उसमें होटेलियर्स भी हैं, उसमें घोड़े वाले भी हैं, उसमें टैक्सी वाले भी हैं, उसमें शिकारे वाले भी हैं, हाउस बोट वाले भी, हर तरफ से हर कोई इंसान उसमें इन्वॉल्व है और लाखों में इन्वॉल्व हैं इस टूरिज्म इंडस्ट्री में। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि कई सालों से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि साहब टूरिज्म को जो है इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए, सो दैट हमारे लोग जो हैं इसका बेनिफिट उठा सकें। मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। साहब, हमारे यहाँ ये गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से, 2019 में 2019 they took employment for the battalions, border battalions. People went through all the tests. Sir, आज देखिए हाल क्या है। वो आज इंतजार कर रहे थे कि अब नौकरी लग जाएगी, वो सब लिस्ट जो है इनने खत्म कर दी और एक नई लिस्ट आएंगे जिसमें ये चाहेंगे कि बाहर की रियासतों के लोगों को लिया जाए। साहब, ये हमारे से नाइंसाफ़ी है और इसकी तरफ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए कि इन लोगों को ऐसा धक्का न दिया जाए कि हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएं। साहब, एक और चीज़ है जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सोचना पड़ेगा इस पर। गोल्ड कार्ड आया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली, गोल्ड कार्ड आया कि गरीब लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। मगर साहब, आज हालत ये है कि गोल्ड कार्ड होके भी जब वो अस्पताल जाता है तो गोल्ड कार्ड इज़ नॉट ऑनर्ड। ओनली yesterday a patient rang me. He had to undergo an operation for piles. Poor man. He had the gold card, but the hospital refused to take him in. Where is the hospital? Huh? Which hospital? In Srinagar. So I will be grateful, sir, if Government of India could look into this thing.
Two sectors are vital for growth of India. One is education, one is health. I request that much funding should be done for this also. Otherwise, we will remain backwards and we will not be able to compete with the world of tomorrow. This is vital. Also, I will request finally, please increase the funding. आज भी आप देखें, we have national highway, the only highway connecting us to the rest of the country. और उसका हाल ये है कि आप उसके पुराने 30 मील रामबन से बानीहाल थोड़ी सी बारिश हो जाती है, बर्फ पड़ जाती है, वो सारी सड़क बैठ जाती है। तब ये लाइफ लाइन है। इसकी तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज इंक्रीज द फंडिंग फॉर रोड्स एंड टनल्स. वी नीड दिस वेरी badly. This will make people's connection easier and the state will improve. I am very grateful, sir, for your time and to the people who have listened to me. Thank you. Thank you very much, Dr. Farooq Abdullah ji. Next, Sri Dilip Ghosh ji. धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 3 दिन से बजट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सुझाव आया है, समर्थन विरोध भी हुआ है, लेकिन इस अमृत काल में माननीय अर्थ मंत्री जी ने जो अमृत हम लोगों को दिया है, उसके लिए मैं उनको और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। और पहले बजट आता था, हम लोग बचपन से देखते थे, दूसरे दिन पेपर में हम लोग पढ़ते थे बजट क्या है, सिगरेट में कितना कर कम हो गया है, कॉस्मेटिक्स में कितना कर बढ़ा है, गैस कितनी कम हुई है, गाड़ियों में कितनी कम हुई है, और एक ऊपर नीचे एरो दे के दिखाया जाता था कि कितना कम सम हुआ है। और दूसरे दिन फिर रेल बजट आता था, उसमें एक मुख्य बात होता था, लोग तुरंत पेपर देखते थे कि किस प्रदेश को कितना नई ट्रेन मिली है, नया ट्रेन का ही राजनीति होता था, यही पर बजट सीमित होता था। लेकिन इस बार का जो बजट हुआ है, इसमें तो कोई चमक तो नहीं है ऐसा कि देखने में लगे बहुत बड़ा कोई धमाका हो गया है। लोग देख रहे थे कि बहुत बड़ा घोषणा होगा, लेकिन पिछले 2 साल में जो अतिमारी विश्व को ग्रास किया था, उससे देश को, समाज को निकालने के लिए जिस प्रकार तैयारी होनी चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसका प्रयास किया है। और अर्थनीति को पटरी में लाना, दुनिया के सामने और चुनौती को स्वीकार करते हुए कंपटीशन में आगे बढ़ना और लोगों को फिर एक बार काम में लगाना और गति लाना, इसको देखते हुए बजट का प्रस्तुति हुई है। पहले बजट के लिए हम लोग 1 साल सोचते थे, 2 साल, 3 साल, 5 साल सोचते थे। इस बजट अगले 25 साल देश को कहां ले जाएंगे, हम उसका एक रोड मैप है, इसलिए बहुत दूर तक सोच करके बजट बनाया गया है। इसलिए लोगों को नजर में नहीं आ रहा है कि बजट क्या है। ये बजट समावेशी है और महामारी से निकाल करके अर्थनीति को पटरी में लाना और साथ साथ गति देना, दोनों काम इसमें हुआ है। मुझे लगता है आगे भी होगा और ये पूरा हताशा कट जाएगा और फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। हमारे विपक्ष के मित्रों काफी चर्चा कर रहे थे, अलग अलग आंकड़ा दे रहे थे, स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि लोग बीमार हो जाने के बाद मुंह का स्वाद, टेस्ट चला जाता है ना, पिछले 2 साल की जो बीमारी, उसके कारण समाज का और लोगों का वही हाल हुआ है। चाहे अच्छा चीज दीजिए, चाहे बुरा चीज दीजिए, लोगों को टेस्ट लगता है नहीं, मुंह में सब खराब ही लगता है। तो ये सब कटने में थोड़ा सा समय लगेगा, उसका इंतजार भी करना पड़ेगा। 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा, जल, सड़क, विमान, रेल और गण परिवहन, सबको इस 7 क्षेत्र में गति आएगा। 2000 किलोमीटर रेल लाइन को आधुनिक टेक्नोलॉजी से और एक्सीडेंट रहित बनाने के लिए नया प्रयुक्ति और नया देशीय तकनीक से उसका उन्नयन होगा। अभी हमारे प्रदेश में जलपाईगुड़ी में बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, बहुत लोगों का जाने गई, नुकसान भी हुआ लाखों का। इससे बचने के लिए ये नया देशीय जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका भी प्रयोग शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से बड़ी बड़ी जो चीजें घोषणा हुई, आगे 2-3 साल तो उसका आगे भी लाभ मिलेगा। माननीय अटल जी ने देश को महासड़कों द्वारा जोड़ा था, एक देश श्रेष्ठ, एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा देश को जोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया।
अभी माननीय प्रधानमंत्री जी उसी में प्रधानमंत्री गति शक्ति के द्वारा देश को और अर्थनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। भारतमाला और सागरमाला का नाम हमने सुना था, उसका लाभ देश को मिल रहा है। इस बार पर्वतमाला की नई योजना आई है, जिससे देश से दूर दूर प्रदेश में, दूर दूर क्षेत्र में जो गांव में, अभी माननीय फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे थे, जैसे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल से लेकर हमारे बंगाल के दार्जिलिंग तक, ऐसे कई गांव हैं, सैकड़ों गांव दूर दूर पहाड़ों में बसे हुए हैं। लोगों को शहर से या तो बाजार से जाने के लिए घंटों चल के जाना पड़ता है, उससे लोगों को निजात मिलेगा। और ये पर्वतमाला की जो योजना है, आधुनिक तकनीक से लोगों को जोड़ने का, आने जाने का, इसका भी लाभ मिलेगा। 75 साल के बाद इन लोगों को विकास की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार नए नए योजनाओं में, और ये जो नई चिंता योजना आई है, इसको समय लगेगा थोड़ा। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं, वहां सरकार है, वहां सरकार का एक ही काम है, एक ही अभी समस्या है बंगाल में, एक ही है, गवर्नर हटाओ। लगता है गवर्नर हट जाएंगे तो सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। पिछले 4-5 दिन पहले माननीय गडकरी जी ने एक नई घोषणा की, बंगाल के साथ जुड़े हुए और बंगाल के हाईवे के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया का उन्होंने घोषणा किया। अगले 2-3 साल में इसका ये योजना फलप्रसू होगा, लेकिन उसके लिए जो जमीन चाहिए हाईवे के लिए, वो राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। खाली हाईवे के लिए नहीं है, बागडोगरा एयरपोर्ट आज सिलीगुड़ी में, उसके लिए 600 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ है, केंद्र से दिया हुआ है। अभी तो उसका जमीन नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, और उसकी कैपेसिटी से 4 गुना बोझ उसको उठाना पड़ रहा है। और भी नया नया विमान सेवा जो शुरू होने वाला वहां से, वो भी संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि जगह की कमी है। एयरपोर्ट वो डिफेंस का है, इसलिए उसकी समाधान नहीं हो रही है। फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं है, हाईवे के लिए नहीं है, रेलवे के लिए है, एयरपोर्ट के लिए नहीं है, तो फिर विकास कहां से होगा, नौकरी चाकरी कहां से होगा, लोगों के पास काम से कहां आएगा। राज्य सरकार इसमें लाचार है, इसलिए वहां के लोग इससे वंचित रह रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। ऐसे हमारे बंगाल में एक परंपरा बनी थी, केंद्र सरकार की बजट के पहले दिन वहां बजट आता था। अभी इस साल बजट आएगा, कब आएगा, आएगा नहीं आएगा किसी को मालूम नहीं है। अधिवेशन कब होगा किसी को मालूम नहीं है। वहां बजट नहीं होगा, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रवास में गए हैं, वहां घूमने गए हैं, और बंगाल के लोग 2 रुपया चावल जो मोदी जी भेजते हैं, 3 रुपया गेहूं, उससे गुजारा कर रहे हैं। लोगों का इनकम क्या है, मनरेगा, गरीब लोग 100 दिन का काम मिलता है, और सबसे ज्यादा पैसा उसके लिए बंगाल सरकार को मिलता है, उससे गरीब लोगों का गुजारा होता है। केंद्र का पैसा हुआ, भेजा हुआ चावल, दाल, गेहूं, और पिछले 2 साल से वहां लगभग 80% लोगों को इस प्रकार फ्री में राशन मिला है, उससे लोग जिंदा रहे। गरीब लोगों का काम बोलने से मनरेगा, गरीब लोगों का गुजारा के लिए केंद्र सरकार का दिया हुआ ये जो अन्न जनधन योजना में, अन्न योजना में जो चावल दाल, उससे गुजारा हो रही है। लोगों को अगर नौकरी चाकरी पढ़ाई करना है, पढ़ाई के लिए हमारे नौजवानों को बेंगलुरु या तो हैदराबाद जाना पड़ता है, और दवाई के लिए चेन्नई मुंबई जाना पड़ता है, और कमाई के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। और वहां की फैशन क्या है, वहां की सरकार जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करती खुलेआम रास्ता में करता है, पंडाल लगाकर रास्ते में होता है, कोई हॉल में नहीं होता है, और वहां होता है। और वहां से पीएम को, एचएम को, गवर्नर को गाली देना एक फैशन सा बन गया उधर। और वहां की जो पार्टी है, सरकार में है, उनके नेता, उनके गुंडे विपक्ष को, विशेष करके हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पेड़ में टांग देते हैं। उनका मनोरंजन का माध्यम है ये। आप देश भर में दीपावली मनाते हैं, उसमें बम फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, आवाज होता है। ये साल में एक बार, हमारे वहां तो हर महीना होता है। अभी 4 दिन पहले हाली शहर उत्तर 24 परगना में एक बम ब्लास्ट हुआ है, गंगा किनारे में था, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, झाड़ी में बॉल लाने गए तो बम फटा वहां, और एक बच्चा वहीं मरा, 2 का शरीर चित्रा बितरा हो गया, गंगा में चला गया, अभी उसका ढोके मिला भी नहीं। ये स्थिति है। ऐसा कोई जिला नहीं जहां बम बंदूक की कारखाना नहीं मिलती है, बम ब्लास्ट नहीं होती है। पूरा देश के गैंगस्टर और एंटी सोशल जाकर वहीं पनाह लेते हैं, और बांग्लादेश के टेररिस्ट आकर बंगाल में शेल्टर लेते हैं। पूरा देश में कोई बम बंदूक की आवाज नहीं, कोई आरडीएक्स और माइंस की आवाज नहीं है, लेकिन बंगाल में हर जिला में इस प्रकार आवाज आ रहा है, और लोग डरे डरे वहां जिंदा और जीवन बिता रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। हमारे ये जो बंगाल के किसान सम्मान निधि, देश के लगभग 11 करोड़ से ज्यादा लोग, गरीब किसान, इससे लाभान्वित हो रहे हैं 2 साल से, और अभी हमारे वहां लगभग 72 लाख किसान इससे हकदार हैं।
और पिछले चुनाव हुआ मई में, उसके बाद लगा मुख्यमंत्री को लगना चाहिए तो बंगाल के किसानों को ये सब देने की अनुमति उन्होंने दी। लेकिन फिर भी ये 72 लोगों में से केवल 27 लाख लोग गरीब किसान को मिल रहा है, बाकी लोगों को वंचित रखा गया है। उनका नाम और एड्रेस, फोन नंबर, उनका अकाउंट नंबर भेजना चाहिए राज्य सरकार को, उतना भी नहीं भेज रहे हैं। इसलिए वहां की मोदी जी का दिया हुआ जो 6,000 रुपया हर साल किसान सम्मान निधि, बंगाल के किसान उससे वंचित रह गए हैं। और उसके साथ साथ जो दवाई का आजकल ट्रीटमेंट का कितना खर्चा सब जानते हैं। बंगाल की जो हॉस्पिटल है उसकी खास्ता हालत है, वहाँ के डॉक्टर अभी हड़ताल कर रहे हैं, वहाँ के नर्सेस हड़ताल कर रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, और वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल में बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल बंद हो जाता है, लोगों को चेन्नई जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। इसलिए केंद्र सरकार ने जो आयुष्मान भारत की जो योजना दी है, बंगाल के लोगों को उससे वंचित रखा गया है। वहां करोड़ों लोगों को उससे लाभ मिलने वाला था, लेकिन वहां की सरकार की इस प्रकार नीति है कि बंगाल के लोगों को हर चीज से वंचित रखा जाए और केंद्र सरकार का केवल आलोचना किया जाए, इससे लोग भी वंचित हो रहे हैं। यहां हमारे अभी साल में बहुत बड़ा तूफान आया, दो बार आया, पिछले साल आया, हर साल लगभग आता है बंगाल में, अभी उड़ीसा जैसा। उसमें धान की फसल बहुत बड़ा नुकसान हुआ, खराब हो गया, सब्जी पूरा खराब हो गया। अभी सब्जी बहुत कीमती है वहां, और साथ साथ आलू जो खेती होता है 7-8 जिलों में हमारे बंगाल में काफी बड़ी मात्रा में आलू की उपज होती है, वो भी खराब हो गया। एक बार बोए लोग बीज, खराब हो गया, दूसरा बार भी खराब हो गया, कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन वहां के किसान को मदद करने के लिए वहां की सरकार तैयार नहीं है। किसान रोते रह रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, जो भी था वो उसमें खर्चा कर दिया, अब खाने के लिए उनके पास नहीं है, और अगले खेती क्या करेंगे उसके लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। इस प्रकार भयंकर परिस्थिति में वहां की लोग गुजारा कर रहे हैं। लेकिन उसका विरोध करने से आपको जेल में ठूसा जाएगा, आपको मारा पीटा जाएगा। चुनाव के बाद लगभग 60 लोगों की हत्या हुई है, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। अभी लगभग 42,000 फॉल्स केसेस हमारे कार्यकर्ताओं पर हो रही है। हम केसेस लड़ रहे हैं, हजारों लोग घर से बाहर हैं, भागे हुए पुलिस के डर से, हजारों लोग जेल में हैं। अभी वहां लोकल बॉडी चुनाव हो रहा है, म्यूनिसिपैलिटीज का, 4 कॉर्पोरेशन का, 108 म्यूनिसिपैलिटी का घोषणा हुई है। इसी का फायदा उठा करके पुलिस ने अपने कार्यकर्ताओं का केस देख करके घर से बाहर कर रहा है कि वो चुनाव ना लड़ पाए। आज की खबर है, वहां नॉमिनेशन रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा, पुलिस खड़ा है वहां, डंडा चला रहा है, उनके गुंडा गिरे हुए, हमारे कार्यकर्ता नॉमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। लोकतंत्र वहां केवल मात्र चर्चा का विषय है, सेमिनार का विषय है, वास्तव में लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र अधिकार मांगते हैं यहां आकर के कि लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, वहां विरोधी का कोई लोकतंत्र नहीं है। गवर्नर को गाली देना एक फसन है, जहां लोकतंत्र का तो संविधान का प्रतिनिधि वहां गवर्नर है, उनको उनका व्यक्तिगत नाम से उनको काला झंडा दिखाना, उनका गाड़ी रोकना, उन पर गलत शब्द प्रयोग करना, मुख्यमंत्री से लेकर सारे नेता बोलते हैं। ये गणतंत्र के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, बहुत बड़ा एक धोखा है, गणतंत्र का अपमान है। इसका मैं विरोध करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूं। इस बजट को समर्थन करता हूं, सारे महाप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करता हूं इस बजट को पारित करने के लिए सहमति से बजट हो पारित हो कि आगे चल के खुशहाली हमारे देश में आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कादिर आनंद जी। She has not taken even a single word into her note, which Mr. Mr. Kadir Anand ji. Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. Thank you for giving me an opportunity to speak on this union budget. Sir, after this budget was presented in this August House, many chief ministers had their comments. Tamil Nadu Chief Minister, who is really revolutionizing the state in administration as well as socio-economic policies, has flaunted this budget, that it is not a budget of a common man. Sir, my father, Shri Durai Murugan, is the leader of the Tamil Nadu Assembly. He has been in the politics for more than 50 years. Recently, the Tamil Nadu Assembly celebrated him and congratulated him for continuing
in the assembly for 50 years and still undefeated from the same parliament, from the same legislative assembly. When I asked him, what is the reason behind the success of a politician or a political party? He clearly said, he gave the words, he clearly gave me a word saying that when a party or a government fails to address the poorest of the poorest man in the governance, then automatically the government will be a failure. I asked him, what is his reason behind being elected again and again? He told me very clearly, I respect my constituency as a temple and I worship my voters as my real gods. But this government, I don't see that they have done anything to the common man. Sir, when no welfare schemes have been given in this budget, when you see the overall budget proposals, the North has been given lot of funds, but the South has been deprived of. Even during the pandemic, every member of parliament came running to the Prime Minister's office as well as to the Home Minister's office asking for relief fund. But we didn't get any funds. They gave us a good hope and sent us back. We didn't have any relief fund. The GST compensation is still due after June 30th. The Manrega scheme, which was a beautiful scheme, where the common lady in any constituency, the poorest lady in the constituency, was able to make their day because of the Manrega. They were not dependent on their husbands. But when this Manrega is now, the funds have been reduced, it is really depriving of their daily livelihood, sir. Repeated announcements, housing for all, for doubling the farmer income, linking Peninsula rivers, and also 1 crore in just 59 minutes for the MSC segments. Everything is only in documents and nothing is happening in real. Sir, when we talk about farmers, agriculture, which is a very big issue which has been talked about. I was looking at the government is going to announce a lot of things in this agriculture. But nothing has been said, sir. And recently, a member raised a question in the August House. He asked the data of the farmers' suicide while protesting for the 3 formulas. The government said, I am quoting what has been said by the minister, no information regarding the suicide by any farmer while protesting the 3 formula is available with the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The government is not even aware how many suicides has happened. Further, they said, the subject of compensation to the families of the deceased farmers in the farmers' movement is with the state government. So, the union government has washed away whatever happens to the farmers. They don't even care. The second question was asked. The Farm Act has been repealed, but what happens to for the contracts, everything which is being signed during the tenure of the farm law? The government says the agreements entered by the acts after the 3 principal acts and before passing the repeal act will be governed by the legal provisions. What that means? Whatever agreements made by the farmers and the organizations after and before repealing of the farm laws will be existing. So whatever damage has been done, the government doesn't care about it. Not even 1 single rupee has been announced by the union government for the benefit of the deceased farmers. Sir, this is an anti-agriculturist budget. That is what I can tell about. Sir, please, sir, I have got just few more points to make. Sir, when you talk about projects that has been announced by this government, especially railway projects. Just a completing, sir. The Southern Railway was allocated 7,114 crores. Northern Railway
has been allocated 66,000 crores, sir. This is an example of how the center deceives the state, the south. Sir, again I want to conclude with only one point, sir. Please don't disturb me and just give me a moment. Madam, please. NEET is a subject which is a matter of this hour. Sir, in the NEET பத்தி சொல்லணும்னா madam understands Tamil language, so I would like to talk in Tamil. இந்த NEET பத்தி நான் சொல்லணும்னா 2020க்கு முன்னாடி, before 2020, the entire hospitals in the state was built by the own money, state money. After the 2020, the central government announced a scheme, 60-40%. Money was given by the central government and hospitals are built. Now, in the NEET, they say all the seats will be through the NEET and state will not enjoy any benefit out of it. Everything is an open competition. But ஒரு hospital கட்டி முடிச்ச அப்புறமா, after the hospital is completed, sir, I'm concluding, sir. After this hospital is being completed by any government, sir, I'm concluding, sir, please. Only conclude. The maintenance of the hospital, salaries of the hospital, and also all the expenses of the hospital has to be borne by the state government. Anandji, Now tell me, sir, what is the law behind it? The state has to spend all the money and someone from the North India will come into the South India, will take those seats and they will enjoy the MBBS seats. Conclude kindly. I'm concluding, sir. I'm concluding, sir. I'm announcing next name. And I'm telling you, after they complete their PG, state government usually used to send the doctors to the primary health centers. Sir, I'm completing, sir. Primary health centers. And we used to serve in the villages. Now, the persons will come in, they'll take their 100 degrees and they'll walk back to the northern state. Sir. Hello, I request all the member, we have a very long list and all other people have to conclude within 5 minutes. एक sentence में conclude कीजिए. ठीक है, sir. So this government, when I conclude my speech, I want to tell this union government, to our Honorable Finance Minister, with her august presence here, that this government deprives all the rights for the state in Tamil Nadu, and it only is... 5 minutes में आप अपना बात को समाप्त कीजिए. Sir. आप तो बहुत वरिष्ठ मेंबर हो, मगर यहाँ बहुत लंबा लिस्ट है और हमें कंक्लूड करना है. राघवन जी. Sir, thank you, respected Chairman, sir, for giving me this opportunity. Sir, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था in this August House, हम टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, हम ऐसा गैंग से नहीं है सर, हम एक महासंगठन से है, उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस. आप हमारा देश का ऐतिहासिक फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उधर आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस. आपका सरकार कॉर्पोरेट सरकार है, हम इस देश के आम आदमी के साथ हमेशा रहेंगे. Sir, Honorable Chairman, sir, Madam Finance Minister has said that we have entered into Amritakal. Sadly, to enter into Amritakal, we have to consume the Kalaguda to save the world. Sir, according to Bhagavad Purana, Tada Karadali Kritya Vyabi Halahalam Visham, Abhaya Kshayan Mahadeva Krivya Bhuda Bhavana. So, which means Mahadeva, out of compassion for the welfare of all living beings, consequently took the widespread halala poison in his hand and drank it. Sir, the Kalaguda that India faces today is the blow. The pandemic has attacked our economy. This Kalaguda can only be eliminated if we had allocated sufficient funds for health to fight this
pandemic. Unfortunately, that was not seen. Health costs are rising, but the budget outlay for the health has dropped. It is sad and shame that only after intervention of Honorable Supreme Court that the government fixed the compensation for the victims of COVID-19 pandemics. Sir, one of India's greatest poet and environmentalist, Sugatumari teacher, has said, "Aro paranyu, muruchu maatam kedubadichuru avayavam, pakshe kodum kedubadicha pavam manaso." See, what is the meaning? A deceased part can be cut and removed, but what can be done to the poor heart deeply deceased? Sir, the government is heartless when it comes to poor pupils, farmers, laborers, Dalits. The government is heartless when it comes to country's youth. The government is heartless when it comes to women of this country. The government is heartless towards our healthcare sector. Sir, what have you done to Manrega? You have cut the funds by 25% to 75,000 crores. Let us not forget the massive areas to be paid to states under the scheme. The single scheme alone was the reason why our poor people from rural areas did not go hungry since the pandemic. You call us Tukade gang, and often asked, what is the legacy of the UPA government? Sir, we say with proud that we do not belong to Tukade gang. Rather, we are proud members of Indian National Congress. Sir, what we brought in Manrega, we brought in Food Security Act, we brought in RTI, you diluted it. We brought in Right to Education Act, we brought in Street Vendors Protection Act. Sir, the list is endless. So what does your government do? You pass bills without discussions and then repeals it. Sir, one thing I remind you, in this context, we are proud of our great leaders Sonia Gandhi and former Prime Minister Manmohan Ji, who are architects of the above-mentioned pro-poor schemes. One thing very clear, sir, if the UPA government had not been implemented this great Manrega scheme, we would have been to witness the starvation, deaths and mass suicides in our villages under your Modi ji regime. So the entire nation has thanks to UPA. Sir, please, sir. Kindly conclude. Sir, please, sir. So you leave behind large billionaires. You left the farmers' income and not doubled. We all know whose income has doubled in 2020. You leave people's mind divided. You have cut subsidies on food and fuels. What legacy is this, I ask? According to the World Inequality Report 2022, India stands out as one of the most unequal countries in the world with widespread poverty along with an affluent life. Sir, please, sir. Madam Finance Minister, I am sorry to say that the budget totally neglects India's massive middle class. Sir, Madam Finance Minister, see, I think perhaps you forget about Kerala state as whole. Madam Speaker, Madam Finance Minister, we are the part and parcel of the nation, sir. The Kerala was totally deliberated, neglected in this year budget. I will, please, sir. I will cite examples for this same. There was no announcement for the aims at the Kozhikode, which we were waiting for these years. Sir, the defense allocation totally neglected the Nirdesh Defense Building Research Center at Kozhikode. The fate of this great institution now hangs in... Sir, please. 1 second. I will take only 1 second, sir. Only 1 minute. One, sir. The allocation of funds for aims at Kozhikode. One of the IMHANS telecom consultation center be allocated to Kozhikode in association with the IMHANS. Sir, the Kozhikode-Wayanad connectivity be brought under National Ropeway. Sir, I am concluding my point, sir. Sir, that is... 1 second. Sir, government has continued with the habit of selling public sector undertakings. Government must thank former Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru ji. Had Nehru